video is from Hillsar English Medium School. Hello students, today we start Standard 7, Subject Science, Lesson 3rd, Fiber to Fabric. In your earlier class, you have studied about the plant fibers like cotton, how they are cotton, jute, how they are spun into the fibers from fabric to get, what are the different processes are carried out. In this lesson, we will specifically learn about the different animal fibers and how they are spun into fabric. So, in some of the fibers obtained from the plants, you also learned that the wool and silk in your earlier class in short. Wool is obtained from the fleece. Fleece means F-L-E-E-C. Fleece means hair of the sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. तो सिल्क वर्म जो होता है उसका मॉथ बनता है एंड देन फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग अ कवरिंग दैट मीन्स ककून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी इल्स फाइबर? आपको पता है शिप्स के कौन से बॉडी पार्ट से हमें फाइबर मिलता है? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नाइट द स्वेटर? आपको पता है ये फाइबर से हमें कैसे वूल मिलता है, वूल से हम स्वेटर बाद में बनाते हैं, राइट? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू द सिल्क? सिल्क फाइबर को सिल्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके फिर साड़ीज कैसे वोवन करते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. सो वी विल लर्न in detail about the animal fiber, that is wool and silk. In this part, that is part 1 of this lesson, we will see about all about the wool, sheep, different types of sheep, how the fibers are collected, how they are further processed to form its fabric. Let us start with the wool. Wool comes from the sheep, goat, yak and some other animal. So the hair of the goat, yak and sheep we call wool. This wool yielding animal, wool yielding मतलब जो animal से हमें wool मिलता है, they bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? क्यों होगा उनके body में thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you could learn in chapter 4. So hair keeps the animal warmer. So main work of the hair is to keep them warmer. Or wool. Animal fiber, wool. Fibers are used to make yarn, which in turn is used to make fabric. Fibers obtained from plants are plant fibers, while those obtained from animals are animal fibers. For example, wool and silk. In this video, we will talk about wool. Some animals such as sheep have thick coat of hairy fibers on their body. It is called fleece. The question is, why do they have such a thick coat of hairs? Reason is simple. Fleece traps air. Since air is bad conductor of heat, therefore, heat does not pass from animal body into surrounding environment. This helps to keep their body warm. We obtain wool from fleece of sheep. The clothes made of wool keeps us warm. Basically, the skin of sheep have two types of hairs, coarse beard hair and fine soft underhair located close to skin. Wool is obtained from fine underhairs of sheep. There are some breeds of sheep which have only fine underhair. If we select parents which produce only soft underhairs, then they give birth to a sheep which will have only soft underhairs. So, it is possible to produce organism with desired characters by selecting the parent of similar characters such as soft underhair. The process is called selective breeding. There are other animals too which provides wool. For example, yak wool is popular in Tibet and Ladakh. Angora goats found in hilly regions like Jammu and Kashmir provides Angora wool. Wool is also obtained from the hairs of goats. The underhairs of Kashmiri goats are very soft. These are used to make fine shawls called
pashmina shawls. In South America, animals such as llama and alpaca provides wool. Angora rabbit also provides wool. I hope you have understood this topic very well. Thanks for watching this video. सो आपने देखा होगा कि कैसे हेयर को रिमूव करके उससे फाइबर बनाया जाता है और कितने टाइप्स के हेयर होते हैं एंड व्हाट आर दैट वर्क ऑफ द हेयर ओवर द स्किन ऑफ द एनिमल. सो लेट अस मूव अहेड. लाइक अस द हेयर स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीज. कौन से फाइबर होते हैं? फर्स्ट इज द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर hair close to the skin. जो बड़े बड़े hair होते हैं that is the coarse beard hair, and small hair which are the fine and soft one which are near the skin. They present the special chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. So selective हम sheep use करेंगे जिसके जो soft hair होते हैं वो. This process of selecting parents for obtaining special character in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed as selective breeding. So we are not collecting hair of all kind of sheep. ऐसे ही particular sheep हम लेंगे जिसकी जो under hair है soft हो और उससे ही further हम breed करेंगे मतलब बहुत सारे उसके reproduction करके more number will derive so that उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे या उनके जो बच्चे होंगे उनके भी हेयर जो होंगे अंडर हेयर सॉफ्ट होंगे. दैट प्रोसेस वी कॉल सिलेक्टिव ब्रीडिंग. दैट इज ब्रीडिंग ऑफ सिलेक्टिव टाइप ऑफ शीप. ब्रीडिंग मीन्स reproduction, further multiplying their numbers. The animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in the different parts of our country. अलग अलग ब्रीड से अलग अलग टाइप्स ऑफ शीप से जो हमारे कंट्री में मिलते हैं. हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल. जो वुल ही मिलता है ऐसे नहीं. थ्रू वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट. दो वुल इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट. द शीप वुल याक वुल इज़ कॉमन इन द तिब्बत एंड लद्दाख. हमारे यहाँ पे शीप वुल मिलता है बट अदर प्लेसेस वुल ऑफ याक इज़ टेकन इन तिब्बत एंड लद्दाख पार्ट ऑफ आवर इंडिया. मोहायर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अंगूरा गोट. सो अलग अलग गोट से शिप से हमें वुल मिलते हैं विच इज़ फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. सो वहाँ के स्वेटर्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं कंपेयर टू एप्लस. वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट. तो वो कश्मीरी गोट को ब्रीड करते हैं. इट इज़ वोवन इनटू द फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. और पश्मीना शॉल्स आर वेरी फेमस जो कश्मीरी गोट से मिले हुए वुल से बनाते हैं. द फर और द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज एज वुल. सो कैमल के जो हेयर है फर उसको भी वुल बनाने के लिए एज अ वुल वी आर यूजिंग. सो लामा एंड अप्लाका found in the South Africa yield wool. So what your activity you can do? You can collect the pictures of animal whose hair we are using as a wool. अगर आपको pictures नहीं मिले you can try it with drawing in your notebook. Find out the words for goat, sheep and camel at different places. Find out the other words for this goat, sheep, yak in your local language and also in other languages of any country. So see the picture of yak and llama is given. Some other animals are also there. See the picture of camel is given. Angora goat is there. Normal goat is there. Llama and alpaca. See from fiber to wool. For obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. रेयरिंग मतलब कि उसको ग्रो किया जाता है, उसको खाना पीना दिया जाता है, उसके नंबर्स बढ़ाते हैं. एंड देयर हेयर इज़ देन फर्दर कटेड एंड प्रोसेस इनटू द वुल. हेयर को काट दिया जाता है एंड फर्दर उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है सो दैट इट कन्वर्टेड इनटू वुल. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. अभी हमें ये प्रोसेस वन बाय वन देखनी है. सबसे पहले क्या किया जाता है? रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रेयरिंग किया जाता है मतलब उनको ग्रो किया जाता है, खाना पीना दिया जाता है एंड फर्दर उसका ब्रीडिंग किया जाता है मतलब उनका रिप्रोडक्शन किया जाता है. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see the shepherds taking their herds of sheep
फॉर ग्रेजिंग। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं शिप्स को। शिप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रीफर ग्रासेस एंड लीव। शिप्स जो हर्बीवोर्स है, दे आर डिपेंडिंग अपॉन प्लांट फॉर देयर फूड and they generally use grasses and eats leaves. Apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jar, oil cakes, that are material left from taking out oil from the seeds and minerals. Apart from these grasses, उनको balanced diet दिया जाता है। So उनके डाइट में क्या क्या होता है? पल्सेस, कॉर्न, जार, ऑयल केक। ऑयल केक किससे बनाते हैं? जो सीड्स होते हैं, ऑयल सीड्स, उसमें से ऑयल निकालने के बाद जो कुछ बाकी होता है, दैट इज़ रिच इन प्रोटीन, दो दैट आर गिवन एंड मिनरल्स भी दिए जाते हैं। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। ड्राई फॉडर या फिर लीव्स, जब ठंडी होती है ना, ठंडी के मौसम में, जाड़ों के मौसम में, उन्हें अंदर इंडोर रखा जाता है। So this is how they are taking care of rearing of sheep. Sheep are reared in many parts of our country for wool. बहुत सारे जगहों पे हमारे इंडिया में sheeps are rearing. It gives the name of some breeds of sheep reared in our country for the production of wool. देखो अलग अलग breeders के नाम यहाँ पे I will show you one chart. There it is given. The quality of and the texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of the sheep have thick coat of hair on their body and which yields good quality of wool in the large quantity. So बहुत सारे sheep ऐसे होते हैं जिनकी thick coat hair के होते हैं और जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है wool के। As mentioned earlier, these sheep are selective breed with one parent being a sheep of good breed. So एक parent ऐसा चूज़ किया जाता है कि जिसके बहुत गुड क्वालिटी वूल दे रहा है एंड उसके फिर जो बच्चे होंगे देर आर द ब्रीडेड फर्दर। वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ एंड गेटिंग वूल। वंस वो जो शीप बड़ी हो जाए, उसके ऊपर थिक हेयर ग्रोथ आ जाए, दे आर शेव्ड, निकाल देते हैं एंड फर्दर यूज्ड फॉर वूल। हियर द टेबल इज गिवन फॉर द ऑफ इंडियन ब्रीड शीप। नेम ऑफ द ब्रीड इज लोही। इट इज गिविंग क्वालिटी ऑफ वूल इज गुड क्वालिटी ऑफ वूल एंड कहाँ पे पाया जाता है? ये राजस्थान, पंजाब में। एंड रामपुर बुश है, इट इज़ द नेम ऑफ द ब्रीड। क्वालिटी ऑफ इज ब्राउन फ्लीज, ब्राउन कलर के फ्लीज होते हैं, उसके वूल होते हैं, हेयर होते हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रीड इज़ नली, उसका नाम नली है और दिस क्वालिटी इज कारपेट वूल। कारपेट बनाने के लिए वो जनरली यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ जनरली फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट इज भाकरवाल। भाकरवाल इट इज़ फॉर वूलन शॉल्स, शॉल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ये पाए जाते हैं। मारवाड़ी, मारवाड़ी इज़ द कोर्स वूल। कोर्स वूल होते हैं, फाइन नहीं होते, थोड़े रफ वूल होते हैं एंड इज़ फाउंड इन गुजरात। पठनवाड़ी इज़ ऑल्सो फॉर होजियरी मेकिंग एंड फाउंड इन गुजरात। आई शो यू अ शॉर्ट वीडियो क्लिप फॉर rearing and breeding of sheep. Raising of sheep for obtaining wool, meat, milk, skins and manure is called sheep farming or sheep rearing. People who rear sheep are called shepherds. Sheep have cover of hairs on its body. It is called fleece or fur. We obtain wool from fleece of the sheep. Sheep are herbivorous. They feed on grass. Shepherds take their sheep for grazing. They also feed mixtures of pulses, jawar, oil cakes and minerals to sheep. When winter starts, sheep are kept inside the shelter. Here, shepherds give them leaves, grain and dry fodder to eat. The advantages of sheep rearing are: sheep are strong animal and can live in much more severe environment. Therefore, they need little care and management. In addition, they need little space for living. So, many sheep can be kept in small area. They provide various products which provide very good income within short time. They help farmers by eating unwanted plants in the farm. Here are some of the breeds in India along with their quality and states where they are found. Moreover, if we select parent having special characteristics,
then it is possible to produce a sheep having those characteristics. This is called selective breeding. With the help of selective breeding, it is possible to produce sheep which provide good quality wool. Sheep rearing requires the provision of facilities such as plenty of clean and fresh water, availability of green foods such as grass, provision of medication facility, as well as transportation and marketing facilities. So, sheep rearing is done in the areas where these facilities are available. In India, sheep rearing is done mainly in the hilly areas of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Sikkim and Arunachal Pradesh. Sheep rearing is also done in plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. I hope you have understood this topic very well. Thanks for watching this video. Processing fibers into the wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of the long process. देखो, the hair of that sheep, they are so small and soft. The wool which we are used for knitting and weaving shawls, they are the long one, which is a finished product. So it needs long processing. The first step of that is the fleece of the sheep along with the thin layer of a skin is removed फ्रॉम इट्स बॉडी. पहले उसके ऊपर के जो हेयर्स होते हैं, फ्लीस होते हैं, उसको रिमूव किए जाते हैं. द प्रोसेस वी कॉल्ड शेयरिंग. द मशीन सिमिलर टू दीज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ द हेयर. जो बार्बर्स यूज़ करते हैं ना नहीं यूज़ करते हैं शेविंग करने के लिए, रिमूविंग द हेयर. द सेम काइंड दैट वी कॉल शेयरिंग प्रोसेस इज शेयरिंग. यूजुअली द हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर में रिमूव करते हैं. This enables sheep to survive without their protective coat of hair, because that the work of hair is protection from the cold weather. अगर hot weather में निकालेंगे, that sheep can get easily survive. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. छोटे छोटे फाइबर से बड़ा yarn बनाया जाता है. Shearing does not hurt the sheep, just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. So, do you know why the uppermost layer of the skin is dead? Also, the hair of the sheep grown again just as your hair grows. Once we do the shearing, again the new pattern of hairs come or the grows over the skin. Here, the sheared skin with hair is thoroughly washed in the tank to remove the grease. They are having grease over it or the dust or dirt होंगी, कुछ कचरा होगा तो वो निकाल दिया जाता है. Thoroughly washing in the tank. This is called scouring. Scouring में क्या किया जाता है? Washing of hair. Nowadays scouring is done by machine. Step 3. After scouring, sorting is done. Sorting में क्या किया जाता है? The hair skin is sent to the factory where the hair of different textures are separated or sorted. जो मिक्सचर होंगे अलग अलग टेक्सचर के, सॉफ्ट, स्मूथ और समवट रफ, ऐसे फाइबर्स होंगे, उसको अलग अलग सेपरेट किया जाता है. इन 4 स्टेप द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बोर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. दीज आर सेम बर्ड्स विच sometimes appears on your sweater. So ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इतने छोटे छोटे सॉफ्ट फ्लफी हेयर्स होते हैं, उसको निकाला जाता है. The fibers are scoured and dried. This is the wool ready to be drawn into the fiber. Now this kind of wool further converted into the fiber. 5th स्टेप क्या है? The fibers can be dyed in various colors. जो स्वेटर के अलग अलग कलर्स होते हैं ना, वूल के अलग कलर होते हैं, that is by given artificially color to them. In 6th step, the fibers they are straightened, combed and rolled into the yarn. Fibers को straight किया जाता है. कर्ल होगा तो straight होना चाहिए. Then उसको comb किया जाता है straight करने के लिए. Then roll किया जाता है. So spun into the yarn. The longer fibers are made into the wool for sweaters. The shorter fibers they are spun and woven into the woolen clothes. जो लॉन्ग फाइबर होते हैं तो उससे वूल भी बनाए जाते हैं. सो उससे हम स्वेटर्स बना सकते हैं. You can see here the steps in this picture where the collected the fleeces are
removed over the from the skin of the sheep, that we call shearing process. You can see in this picture scarring in the tank is done, that is washing of the fleece, which is hair which is removed. In this step the scarring by the machine can be done, where the big the small different textures of the fleeces are hairs are removed. And here the step where it is rolling into the yarn. Now I will show you the short clip so that you have the idea of the rearing and converting this wool into the wool fiber will be clear. Processing fiber into wool. We cannot use fibers obtained from sheep directly for making sweaters, shawls, and many other things. Instead, these are processed in stepwise manner. Here, in this lesson, we will learn how fibers are processed into wool. The first step is shearing. The layer of hairs around the sheep body is called fleece. Shearing is the process of removing fleece and the thin layer of skin from the sheep body. For this process, tools similar to those used by barbers are used. The outer skin of animal body is dead, so shearing does not harm the sheep. However, this process must be done during hot weather. The reason is simple. If shearing is done in winter, then the cold climate could harm the sheep, since the protective layer is not present. However, in hot weather, they can remain safe even if there is no protective layer. After shearing, the skin rebuilds in some days and the hair starts growing again. Shearing provides fibers. After shearing, the next step is scouring. The hairs, that is fibers, obtained from shearing contains dirt such as grease and dust. It must be removed before further processing. Thus, the sheared skin along with hairs is washed thoroughly to remove dirt. It is called scouring. It is done by hand or by machines. It is then dried and sent to factory. Scouring provides clean fibers. After scouring, the next step is sorting. In this step, the clean fibers are taken to factory where they are separated according to the texture such as length and color. The fine hairs are used to make cloths, while coarse hairs are used to make rugs. There are small fluffy fibers called burrs present in the fleece. These are removed and used as burrs on sweaters. The next step in processing wool is dyeing. The fibers are dyed, that is, colored according to need. Since fibers are white, brown or black naturally, therefore, other colors are used for dyeing. After dyeing, fibers are straightened, combed and rolled into yarn. This is how a woolen yarn is obtained. There are two types of fibers, longer fiber and shorter fiber. Longer fibers are used for making sweaters, while shorter fibers are used for making woolen clothes. So, I hope you have understood how fibers are converted into wool. For more such videos, visit learnfatafat.com. So here we end up with this part. Your homework is to write a note on converting fiber into the wool. Further about the second animal fiber we'll see in the part 2 of this lesson. Goodbye.